Good morning, good morning everyone. Is it audible? Voice, audio, and video both are clear. I hope. If there is some problem, you can have comment. Comment କରିପାରିବ. So today's class we will be dealing with that means right of freedoms, or basically we are talking about the freedoms. So freedom which will be given to the citizens, freedom which is given to the citizens by our constitutions. Okay, constitution jaha bhi freedom dechi, with respect to that we will be dealing. Okay, and this good morning Josna Rani. And this freedom is basically jaha bhi ajira class ho, it will be helpful for your namaste Diti OCS Odisha Civil Service. It will be helpful for your ASO exam. It will be helpful for SSC examinations. It will be helpful for OSSC examinations. Okay, so SI GMT sub inspector achi. So it will be helping. See here, this course whatever you will get in the OPSC platform, that will be helpful on the basis of all the examination where GS is included. जोठी भी GS अच्छी सबटी पाई तमरा हेल्प करिवो. And for that, and if you are taking the plus subscription, plus course जहाँ भी अच्छी से को syllabus include करूची, OCS Odisha Civil Service include करूची, ASO include करिवो, and other examination like OMC include करिवो, and also it will include SSC and OSSC examinations. SSC examination जमती कि तमरा CHSL आसीवो. CHSL तो आसी आपे notice पड़े असलानी exam भी अच्छी. Hello Sony, hello Subrat. I hope audio and video are clear, or any problem you are having. Audio video both clear थिबो ना किसी problem अछि. So इस सबु exam पाई there is a course which is launched by OPSC Unacademy, that is your the OPSC plus subscription रे तमरा सबु syllabus टा entirely पढ़ा होची. Okay, very good. Entire syllabus you can find at OPSC subscription. So those who want to take OPSC subscription, it's individual fundamentals. Good morning Chinmay, good morning. Individual syllabus तमरा with the focus of देखो कौन होजी focus रे crash course और basically theory पढ़ा जीवो. थियोरी पर टेस्ट भी हबो, टेस्ट सीरीज भी दिया जाय, जेमि तमे टेस्ट सीरीज अप्लाई करू, टेस्ट सीरीज दो अलगा ये जगह सेटा भी हबो, डिस्कशन भी हबो. डिस्कशन मु मोर टेस्ट सीरीज डिफाइन करिवि, डिजाइन करिवि. मोर जेमति ज्योग्राफी सला तार ज्योग्राफी रे गोटे टेस्ट सीरीज डिजाइन हबो, तार गोटे डिस्कशन भी हबो, बट दैट इज ओनली अवेलेबल इन द प्लस प्लेटफॉर्म. सो जदि तमे गोटे द थियोरी तो पढौची ज्योग्राफी रे मु कहि आछि जे पढौतली बोली, तमे टेस्ट सीरीज दैट मींस अटेंड करिवो, डिस्कशन अटेंड करिवो. सो यू विल हैव ए कंप्लीट नॉलेज ओवर द ज्योग्राफी और एनी सब्जेक्ट व्हाटएवर आई एम टीचिंग. जेमति के हिस्ट्री स्टार्ट हो, हिस्ट्री स्टार्ट हला माने हिस्ट्री भी सेम फंडा रहिवो. थियोरी फर्स्ट कंप्लीट हबो, देन वी विल गो फॉर द ऑब्जेक्टिव और बेसिकली टेस्ट सीरीज, देन वी विल गो फॉर द डिस्कशन. तो ए भलिया वे रे ही हमर मूव करिवो सिलेबस टा. एंड फॉर दैट यू नीड टू बी गेटिंग इनटू दैट मींस OPSC plus subscription, and for that take the subscription by using my code, that is Anil079, and this is you will get 10% discount. Okay, 10% discount मिलिबो. सो कोन सिलेबस देखो अछि, OS मेंस कंपलसरी अछि, OS प्रीलिम्स पाई भी अछि, प्री प्लस मेंस पाई भी अछि. जेमति हिस्ट्री कोर्स जोटा लॉन्च होबो, दैट विल बी इन द बेसिस ऑफ प्री प्लस लॉन्च. OMC जूनियर दैट मींस क्लर्क अछि, CT BD OCS OSSC CPSE मेंस एंड प्रीलिम्स, and definitely I can say it will be helpful for your SSC examination. काहे कि एटी जो माने मैथ्स पढौचंती, इंग्लिश पढौन, जेमति अभिषेक सर इज टेकिंग इंग्लिश, सतीश सर इज टेकिंग मैथ्स. Okay, another some of the faculties are there, they are very good. That means for any field, SSC field नहीं जीवो,
banking field like so any part you are taking, it will be helpful for you. That is why you should take the subscription, and while taking the subscription use my code Anil079. It is gonna have, if your course fee is your 7,000 rupees, you will get, due to this code you will get a 10% discount, and it will be 6,300 rupees only for annum, that means per 1 year, which will be benefited for you. This is your course fee, that means 7,000 rupees. So you will be that means getting that course in 6,300 6,300. Okay, so the benefit of this course is, if you are missing, जेमती कि कालीर क्लास किसी जन मिस कर देथिले कोन ज्योग्राफी रे मु पढेथिले पेनिनसुलर रिवर गुडा कर, जे भी I have completed peninsular river, those who have not gone through the class, you can go for the recording जाई परिबो, जहां भी डाउट हला तम बगर ग्रुप अछि, ग्रुप रे तमे पचारि परिबो जे सर एटा केमती हला डाउट क्लियरिंग भी हबो. Okay, so that is the benefit what you are getting from the OPSC Unacademy platform. Okay, this is my code. Those who are taking the subscription using this code, so they will have a group, special group gote rahibo, and in that group I will be dealing with the every problem, jaha bhi problem face karibe platform में सब जिन को deal करिबी, subject to आरंभ करी question practice everything I will be dealing with that. Okay, so let us start our part. So if you see Mahatma Gandhi, what he told, live as if you are die tomorrow, learn as if you are to live forever. Problem कौन हो, what is the problem with the students? I am talking about the problem of the students. Problem है they are targeting कि देईटा गोटे exam अच्छी तापाई मु syllabus पाई पढ़ी. Suppose let us consider OMC आसिला, OMC syllabus पाई पढ़ी, ता माने आगु जो 2-3 मास पूरा dedicated करी का पाई पढ़ा होची, OMC पाई पढ़ा होची. But एठी कौन हो, that means just putting some effort, that means कौन नहीं reach at, that means shoot at star, shoot at moon, it will reach at star. Okay, तदी moon को मारो तो जदि न बाजिला को तारा रे तो बाजी जीवो ना. तो basically if you see, whenever you are preparing, your preparation should be such that it will be completing the syllabus. कहना जदि एई एग्जाम नु है तापर एग्जाम भी बाजी जीवो जाहले भी, सेति पे गोटे syllabus को complete करिबा को try to understand this one syllabus which is valid or basically relevant for a particular group of examinations, जेमति कि तमर SSC कुह, OSSC कुह, ASO कुह, and I can say here CP, that means civil service examination, Odisha civil service examination prelims ta pai कुह, all have a similar preparation. OS prelims पे टिके डेप्थ जबा को पड़िबो, ASO और OS prelims इक्विवेलेंट केना OPSC ही करूची, SSC तो भी भलो क्वेश्चन बुकौची, OSC भी भलो क्वेश्चन बुकौची. So here you need to gather all the subjects and गोटिए ही syllabus बनेबार अछि, आ syllabus को prepare करिबार अछि. तब टारगेट कर दो या पे तापर किछटा syllabus छाडी जीवो. Those who are preparing माने at least 6 month तक गोटे dedicated हेगी पड़िया दरकार ना. And I can give you the guarantee, dedication हिसाब रे, dedicated हिसाब रे 6 months prepare करो, then I can give you the guarantee कि तमे जानि जीवो तापर गोटे एग्जाम देला पर तमे जानि जीवो जे whether I will be cracking this exam or not cracking this exam, और जदि भी फेल्युअर हेगला मन तमे एटा भी जानि जीवो तमे आउ केते मास लागिवो. तो प्रॉपर ऑनेस्टली जदि प्रिपेयर करिवो ना, सो तुमको भी जाना पड़ जो तमे केबे जॉब पाइबा को जाउ. So that thing is very important in your life कि honest रहबा पई निज को तमे कोन रोज तो कोन ये नहीं. that means जति बेला पढु छ ना पूरा कंसंट्रेशन देकी पढ, सिलेबस को फोकस करियो पढ, सिलेबस को फोकस करो, गोटे पर्टिकुलर एग्जाम को फोकस करो. जेमति कि एबे कोन हला, गुड मॉर्निंग आकाश. So whenever you are focusing, जतले फोकस करू छ, so एबे अपकमिंग एग्जाम बहुत गुडे एग्जाम आसीबो, जेमति कि ASO आसिला, SSC आसिला, CHSL आसिला, and there are so many examination in line जोटा कि COVID-19 जो पोस्टपोन हो जाइए, everything will be coming. ता पाई कोन करबा को पड़िबो, गोटे स्ट्रेटजी बनै कि फॉलो करो. स्ट्रेटजी माने फर्स्ट ला कोन सिलेबस प्रिपरेशन करो, ताकू धीरे धीरे कंप्लीट करी जाओ विद इन द टाइम लिमिट इज वेरी इंपोर्टेंट हियर. ओके, टाइम लिमिट ता बहुत ही इंपोर्टेंट. ओके, सो we have dealt with the fundamental rights. Fundamental rights is, what is fundamental rights? So fundamental rights यदि consider करिवो, fundamental right is basically talking about fundamental rights. If you concentrate, then it is about the, that means reasonable claims.
It is talking about reasonable claims. What is the meaning of reasonable claims? जोटा कि गोटे citizen claim करी for a dignified life. And this dignified life is basically coming. The word dignified life is first introduced in our constitution or introduced by the that means konosi bhi case ru jodi introduce heji, that is under article 21 Maneka Gandhi case. So this is your Maneka Gandhi case. So Maneka Gandhi case is first saying about what is this fundamental rights is saying. Is it about a life where you can live like an animal? No, it should be a dignified life. जे भी बंचुचे तार गोटे डिग्निफाइड लाइफ थिबा दरकार. Now if you see Sushant Singh Rajput case रे काहे की पुलिस इन्वेस्टिगेशन करूची, because there might be chances that he was not getting the opportunity for a dignified life केतेबेले हमें कहि परिबा. So logically जेतेबेले फंडामेंटल राइट्स गुरा जहा भी ताको प्रोवाइड कराइची, if it was not satisfied, then we can say that is not a dignified life. So dignified life को मेंटेन करिबा निहाती दरकार, otherwise it will be animal like life which is not accepted. कहीं ना ता पूर्वरु केबे भी डिफाइन करा ही नथिला जे basically which type of life, what is the meaning of life is defined in the form of Maneka Gandhi case. So basically for a dignified life pai we are providing right to freedom means here we can say what you can do and what you cannot do. First thing is talking about, that means how many right to freedom is given, how many articles. There is a 4 articles, article 19, article 20, article 21, article 22. How to remember देखो first की गोटे how to मन रखिबा केमिति जे first की आसुची कोन आसुची इक्विटी विषय रे. इक्विटी केतेबेला आसिला 14 to 18. सो मन रखिरा 18 पर कोन हे जाउची लोक अडल्ट हे जाए. एमते मन रखियो ठीक है ये रे 18 पर लोक अडल्ट हे जाए. अडल्ट हला पर ताकू कोन मिलिबो, फ्रीडम मिलिबो, कॉलेज जीवो, पु हमर कॉलेज जीवो पढी सालानी ता माने स्कूल सरला, देन ही विल गो टू द कॉलेज. सो हियर डी कॉलेज आसो, कॉलेज रे कोन मिले, कॉलेज रे फ्रीडम मिले. ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. फ्रीडम. सो फ्रीडम केते बेले मिलिबो, 18 वर्ष पर मिलिबो. 18 वर्ष पर माने केते 19 वर्ष, 19 20 21 दैट मींस 22 एज रे कोन हे जिवो, दैट मींस एटी बर्डन पळे आसीबो, दैट मींस रेस्पोंसिबिलिटी पळे आसीबो. ओके, सो बेसिकली 22 रे ही कोन हे जे तम फ्रीडम, ता माने एक्चुअल फ्रीडम केते 19 रु 22 वर्ष. आई थिंक एवरीवन विल एग्री विथ दैट कि फ्रीडम केते बेले मिलिबो, 19 रु 22 एज रे मिलिबो. सो दैट इज व्हाई यू कैन रिमेंबर 19 to 22 it is talking about the right to freedom. कोन फ्रीडम मिलिबो, ता माने मु इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रीडम तो केते बेले फ्रीडम आसीबो, जेमति कि हैव यू सीन द कोन राउडी राठौर मूवी, राउडी राठौर मूवी हैव यू सीन राउडी राठौर और सिम्हा मूवी. से कोन कहूची, से फर्स्ट कहूची जे मैं जो बोलता हूं वो मैं करता हूं. सो फर्स्ट कोन आसी जो मैं जो बोलता हूं माने कोन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ओके, आर्टिकल 19 इज सेइंग मैं जो बोलता हूं वो मैं करता हूं, मैं जो बोलता हूं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ओके, आर्टिकल 20 इज सेइंग फ्रीडम विथ रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस पई माने ता माने तुमको जते अरेस्ट करा जीवो, जो दैट मींस हियर वी कैन से कि जते विलियन को अरेस्ट करिया को जीवो से. सो सेते बेले कोन हो, दैट मींस कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस बेले भी जनक पाखरे फ्रीडम रहउची कि एमिति खाली रे जाय कि तुम अरेस्ट करि परिबोनी. सेति पई यू हैव टू गैदर सम ऑफ द प्रूफ्स. सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. देन 20 इज सेइंग इफ एनीवन इज गोइंग टू होल्ड यू, देन मूवी रे देखि पारो मैं जो बोलता हूं मैं करता हूं, उसके बाद अरेस्ट करने के लिए जाएगा. अरेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए, और बेसिकली व्हाटएवर द डिमांड इज प्रेजेंट हियर यू कैन डील विद दैट. देन व्हाट हैपेंस, तुम जदि जण लोक को अरेस्ट करि देलो तापर कोन हबो, व्हाट इज द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ए पर्सन. तुम ताको नेकी मारि परिबो कि, तुम ताको नेकी दैट मींस यू विल ट्रीट, कैन यू ट्रीट इल. सो लाइफ एंड लिबर्टी बेसिकली डिपेंड्स अपॉन अ पर्सन्स right to live, or basically right to have a dignified life. That is why we are talking about dignified life with Maneka Gandhi case. Okay, Maneka Gandhi case. So एठी कोन हला कन्विक्शन तमे दोचो, तापर लाइफ एंड लिबर्टी आसी, देन वी हैव अरेस्ट एंड डिटेक्शन.
जदि अरेस्ट दैट मींस हियर जदि कन्विक्शन होउची किछि गोटे केस ता ऊपर दिया होची देन हाउ इट कैन बी पुट एठी कोन होची तुम जतो अरेस्ट करिया पई जीवो तो केमिति अरेस्ट करि परिवो दैट मीन केसेस गुडा ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हेई जाईची एठी केस इंट्रोड्यूस हेई गला देन एठी कोन करिवो अरेस्ट करिवो जतो अरेस्ट करि गला माने केमिति अरेस्ट करिवो सो एवरीथिंग इज डेल्ट विथ दैट सो बेसिकली वन इज फ्रीडम देयर इज अ कन्विक्शन जदि केस का ऊपर लगोचो केमिति लगो आई विल डिफाइन हियर एठी डिफाइन करबी केस ता कोन कोन हेई परिवो नाही ओके पूरा दैट मींस इन द हाउस आल्सो यू कैन फील घरे भी फील करि परिवो जे एबळे चलची बोली कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस okay so life and liberty then we are going for the arrest and detention so these are the four freedom so जेतेबेले problem ता कोडी असुची जेतेबेले that means if you see constitution is giving major power to the government and according to the constitutional right or legal right we can say here police or that means here we can say government servants or basically executives what we can say they have a special rights over the people now they can misuse this one and this fundamental rights is ensured to people that government will not discriminate or basically ensures to establish the fundamental rights so because they can be going against these people that is why also we are saying so this will be violated or basically fundamental rights cannot be violated by the government okay there are four freedoms फर्स्ट वन इज जो मैं बोलता हूँ मैं करता हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सेकंड वन इज फ्रीडम ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस थर्ड वन इज योर लाइफ एंड लिबर्टी फोर्थ वन इज योर अरेस्ट एंड डिटेंशन दीज आर द फोर बेसिकली फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू फ्रीडम और राइट टू फ्रीडम इज इट क्लियर एवरीवन आई होप इट इज क्लियर okay so next part is saying article 19 or basically right to freedom of a speech and expression so gote jinsa bhabine je speech and expression kemiti hei paribo that means how it can be speech and expression so freedom of speech obviously you can say freedom of speech that means moro ichha achi mu kahibi suppose golu is here golu kon कहला कहला golu is say okay yes rosni okay now suppose this is golu is saying जहाँ भी कहबो तुमको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है कैन यू से भारत की बर्बादी होगी भारत तेरा टुकड़ा होगा इंशाल्लाह दैट वाज व्हिच इज बेसिकली इन करंट अफेयर्स ड्यू टू कन्हैया कुमार केस so whatever the rights is given according to the constitution or according to the united india and you cannot be violating the concept of this constitution against this constitution तब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करिया पे ट्राई करि परिबनी दैट मींस योर स्पीच शुड नॉट बी गोइंग अगेंस्ट द नेशंस इंटरेस्ट सो बेसिकली you have the speech and expression but it cannot be used against the unity and integrity of the country or personal liberty or basically yes so here what we can say you have speech and expression you can protest or basically हम देखिबा you can go against the government I can say कि government कोन कला जो government has gifted corona virus to the Odisha people Odisha किछि नथला कोड नथला दैट मींस government कोन डिसाइड कला माइग्रेंट लेबर को आडियो भाई माइग्रेंट लेबर आनी कोड रखला स्कूल रे रखि देला without having proper care if it is doing if the people are taken to the school and without proper care so obviously it is spreading लोक माने घर खाइबा नै कि आनी कि सेति कोन कले दबा नबा कले who is going to take care of that so I can ask or I can say government is doing this thing government is doing that thing we have that freedom of speech but it should not be going against eta कोन ही परिबनी it should not be going against the country or nation's interest मु कहि परिबिन जे so ओडिसा अलगा आइ जेवा कथा ओडिसा ये हवा कथा that means it should be supporting the unity and integrity of the country article 19 is saying speech मु कहली that means ये कहला ओके ठीक अछि मु कहली I am speaking that means we are talking about the speech मु कहि सला पर मु कोन करबे असेंबल हे परिबे का से असेंबल होबा आउ तीनटा लोक से असेंबल हे परिबे assembly माने बेसिकली कोन that means here we can say so we can go for assembly of a group of people किसी जन लोग गैदर ही परिबे गैदर ही कि ओड जगह हम डिस्कशन करि परिबे everything but this is not available nowadays because of the pandemic situation so we can assemble at a single place रे हम कोन करि परिबे assemble करि परिबा irrespective of the caste and religion okay assemble हे परिबा association गोटे भी तयारी करी हबो that means it is defined assemble माने it is for a purpose
ओके पर्पस भाई गोटे हवा असेंबली एसोसिएशन माने कोन विथ रेस्पेक्ट टू a that means with respect to a target or basically what we can say जेमति के ट्रक एसोसिएशन or we can make any association here ओके एसोसिएशन करे एसोसिएट हेई परिबा किछि भी जिंस सहित irrespective of the religion caste or basically with respect to religion हेई परिबा नै हेई परिबा association is allowing the religious rights okay so speech हे गला assembly हे गला association हे गला तापर कोन हेई परिबा I can go for if association is provided speech मु कहिली assembly कली नला association कली then what I am going that means assembly हेई परिबा हम assembly हेई जाई परिबा then we can say association हेई परिबा then what we can say movement भी हेई परि movement माने कोन right to protest here protest भी करि परिबा but that protest मु जदी कहली एठी I cannot go for a violent that means ये कोन peaceful protest होबा दरकार peaceful protest माने कोन that means unarmed protest तमे कहबे जे मु बंदूक नै की प्रोटेस्ट करिया जी that is not allowed that is Burhan Wani case so some of the people of India also some of the Jammu Kashmir people is saying also he was also only trying to go against the government as the other people are going only the difference is that he taken the that means armaments no you cannot go against the government with some armament तमे बंदूक धर के काय को रिक्वेस्ट करि जाई परिबनी का किछ कहि परिबनी so how can you say movement will be conducted with the arms से नहीं करि परिबो so obviously it is violating the constitution then it is coming settlement that means any person can settle anywhere now it is available so here we can say any person can settle anywhere can move or basically कोन कहि परिबा हमें travel anywhere travel भी करि परिबो settle भी करि परिबो previously there is some violations article 370 was violation because you cannot settle in Jammu Kashmir unless and until you are born in Jammu Kashmir now it has been scrapped that means you can go for the settlement you can travel anytime so everything is available as of the other states that is settlement is also available with respect to article 19 to Jammu Kashmir state also that means undivided India that means India रे तमे कोन करि परिबो undivided India रे तमे कोनोसी जगह को जाई परिबो but thing is that there is some portions like we can say POK Pakistan occupied Kashmir and China occupied Kashmir or Aksai Chin that is not under India's jurisdiction so here we can see India administered region re this article 19E basically valid because this is not within our territory this is a line of actual control so whenever if you are moving to line of थोड़ी बजरंगी भाईजान सबुडे शूटिंग होची बजरंगी भाईजान पळेला सेडी ये करी कि केतळ देखलो गुली मार दंत डायरेक्ट बजरंगी भाईजान पूरा दैट मींस ब्लैक पोचर केस ही जाता ओके ब्लैक बक पोचर so basically what we can say POK region को अक्षय चिन्ह that is inside the India's territory India रो territory हिसाब रे consider करू छे but it is not allowing us to move and settle in those region that is why article 19 is only for Indian administered region then the last one is coming the sixth one 19th section so here it is saying freedom of a profession trade commerce and occupation see here occupation anyone can occupy any religion that means basically it is the caste rigidity system which was introduced from the early Vedic period or end of the early Vedic period first the kon thila mobility thila but after the Purusha Sukta was included so here what we can say early Vedic period ra sesha adku caste system rigidity he jaitila due to the rigidity in the caste system there is very violent nature was started in Indian territory so that is why this constitution enables us ki occupation you can adopt any occupation okay but government can also open for the recruitment of any religious post जोटा भी पोस्ट रिलीजियस अछि हिंदू सभा पय और बेसिकली हिंदू ग्रुप पय जदी श्री मंदिर रो किछि गोटे एडवाइजर हिसाब रे का को रिक्रूट करा जिवो तो गवर्नमेंट कैन रिक्रूट बाय कंसीडरिंग द रिलीजन एज हिंदू जगन्नाथ टेंपल रा थोड़ी इज एनी रिलीजन आसी परिबे नो बिकॉज़ इट इज वायोलेटिंग द रीजनल दैट मींस रिलीजन एस्पेक्ट ऑफ द पीपल So basically what we can say government can also recruit that means government श्री मंदिर पय भी का को जदी रिक्रूट करिवो you can go for this one
So that means religion is basis re recruitment hei paribo, that I also told in the previous slides. One is your speech, second one is assemble, then is association, then is your movement, then settlement, then profession, trade, commerce and occupation. That is the basically article 19 is saying. So tame kon kari paribo, kahi paribo, you can go and assemble with different people, assembly kari paribo, bosiki discuss kari paribo, association kari paribo, gote purpose hisab association kari paribo, gote target neki association kari paribo, truck association, auto association, student association. You can do this one. Government will not violate. Government अटकेबनी ताको. Next one is movement, you can protest, settlement हेई परिबो, professional, trade, commerce, occupation ताको नेकी हेई परिबो. Okay, this is article 19 is saying. Next is coming, article 19 is coming. So this is the reasonable restrictions of article 19. I cannot say article 19 is provided to me. Article 19 is provided to me. That means I can say this one. Article 19 is talking about the speech and expression. मु मन इच्छा एक्सप्रेशन दे पारिबी, मु मन इच्छा एक्सप्रेशन दे पारि, मो इच्छा हला मु रास्ता मार्केट प्लेस रे ठिया हिची, मार्केट प्लेस रे ठिया कि मु कोन करि पारिबी, मो इच्छा हला मु कोन करि पारिबी, ड्रेस खोल के दे पारिबी. दैट इज नॉट अवेलेबल. ता माने सेटा तुमको दिया होनी. ता मीनिंग होची it must be having a reasonable claim. So it must be saying the sovereignty, integrity. That means it should not be violating the sovereignty, integrity of the country. Security, that means your speech should not distort, or that basically तमे जदी कोनोसी ग्रुप रे सिक्यूरिटी ग्रुप रे अछ कि नल पार्क रे अछ, इसरो रे अछ कि नले तमे इंडियन डिफेंस रे अछ. सो ता पर जाके तमे मन इच्छा जाके डाटा गुडा बाहर को कहि परिबनी कि यू कैन नॉट से समथिंग व्हिच इज वेरी पर्सनल टू इंडिया रे बहुत ही इंटरेस्टेड थिबो. So you cannot say something which is violating or which is hampering the security of India. Next one is very important. Friendly nature to neighboring country. Friendly nature. But thing is that we can say according to international relations. Government is not. That means government नहीं परिबो. तब अलगा को country को friendly nature neighboring country को base करके ही न बता मैं तब कहीं परिबो जे ये अकला से अकला. So this is according to the government. According to the government policy, you can criticize your government. तमे criticize कौन करि परिबो, निज government को करि परिबो, and friendly nature to the neighboring country को करि परिबो. But again depends upon the government. जदि government चाइना से तो झगड़ा होती तमे obviously सोदिला माने government support करिवो. तमे चाइना अगेंस्ट जते जाउ जीवो government support करिवो ना, ban कर दियो सब ये कर दियो. Another one is your public order. Recently got a public order pass is your car is not your private place. 2019 September November current affair. So your car is not your private place. I think so basically if you see car re adhika, so Mumbai, so basically it is Mumbai in the Delhi, Mumbai and Delhi. So they are started to saying कि car more private place अछि, more इच्छा जहाँ आबो कि you can consume alcohol. In public place you cannot consume alcohol. So public alcohol, okay, so that means so if they samane kon bhavanti, so some of the people basically consider कि कार भीतर टा कोन अछि ताकर गोटे प्राइवेट रूम बलिया हबो, निजर रूम बलिया बोली कंसीडर करतेले. That is why government strictly public order notice कला जे it is not your private place. Okay, it is also a public place. Basically कोडी public place जदि मैनेज नेशनल हाईवे की कोनोसी स्टेट हाईवे ऊपर तमे गाड़ी रखिछ, देन इट इज नॉट योर प्राइवेट प्लेस, इट इज योर पब्लिक प्लेस हला माने कोन होई परिबो, पुलिस कैन इंटरवेन, पुलिस तुमको गाड़ी रो खोली के चेकिंग भी करि परिबो, कोन करू जो सेटा भी पछाती पर इफ इट इज वायलेटिंग द पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, तमरे टिके भी सेंस दिबा दरकार. इफ इट इज वायलेटिंग, ऑब्वियसली पुलिस कैन टेक द ऑर्डर, पुलिस कोन करि परिबो, एक्शन नै परिबो. So public order को मानिबा को पड़िबो. You cannot go violate this speech and expression रे कोनोसी भी public order को तमे कोन करि परिबोनी, violate करि परिबो नाही. So remember, so ए जो जिनसडा car is not private place, that is basically considered it legal action हेई पारे इन मुंबई दिल्ली रे basically consider कराई छै. Article 19B कोन कहि छी, sovereignty and integrity को hamper करिबोनी. If you are going for assembly, तमे assembly कलो, like we can say JNU भीतर जो assembly कलो सेठी कोन कलो तमे, you are saying wrong thing against the government of India which is hampering the sovereignty and integrity. That means टुकड़े टुकड़े gang.
and public order किछि भी जदि जिंस अछि कि the government in the interest of people it has been passed, you should support कर देबा दरकार otherwise you can go for the legal that means public interest litigation हिसाब रे जाई परिबो. C is that means here it is saying speech and expression, then it is saying about assembly, then it is saying association. तब जदि मिसिकी ग्यादर है कि सिमिलर नेचर सिमिलर किछि गोटे तमरो टारगेट अछि किछटा सिमिलरिटी इन द पीपल ट्रक एसोसिएशन स्टूडेंट एसोसिएशन एटा कोन हवा दरकार सिमिलरिटी दिबा दरकार अमंग पीपल सिमिलरिटी अमंग द पीपल जदि अछि सो बेसिकली दे कैन गो फॉर सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी विथ पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी. आई होप इट इज क्लियर, नथिंग टू डिस्कस मोर. D and E, general public interest in the interest of scheduled tribe. Now thing is that see here. So D and E, D is saying about the movement. D का विषय को जी movement विषय को जी it is talking about movement. It is talking about movement. It is talking about settlement. Now it is saying if you are doing some movement and a settlement, so it has some violation. What is the violation of article D and E? That means you can movement cause movement kari paribo, and you can go for settlement also. Settlement भी करी परिबा. Have you heard the name चिपकू movement? चिपकू सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड रे तैयारी हितला और बेसिकली इट वाज देन पीरियड ऑफ उत्तर प्रदेश. सो चिपकू मूवमेंट रे कोन हितला? इफ यू सी चिपकू मूवमेंट so similarly Odisha रे गोटे हितला चिपकू मूवमेंट रो जस्ट सिमिलर टाइप ऑफ मूवमेंट व्हिच हैज occurred in basically ढेंकानाल रो रीजन रे हितला फॉरेस्ट रीजन रे गवर्नमेंट कोन करतला जे गोटे टेंडर पास करतला गछ को काटी देबा पई. सेठी कोन हितला चिपकू मूवमेंट उत्तर प्रदेश सुंदरलाल बहुगुणा केस रे कोन हितला जे सेठी जाई कि से कोन करतले गछ काटिबा को जो माने आसुतले से माने कोन गछ को कुंडे की धरि पकोतले. सो दैट इज व्हाई से कहतले जदी गछ को भी काटिबा हमकु भी काटिबो. सिमिलर केस अकड़ी ने ढेंकानाल आई थिंक सम रीजन गोविंदपुर रीजन. In that what we can say general public interest in the interest of scheduled tribe. जदी scheduled tribe हिसाब रे जदी कहइबो मूवमेंट को और सेटलमेंट को भी रेस्ट्रिक्ट करि परिबो. So जदी general public in the case of scheduled tribe means tribal people basically. With respect to tribal people, so obviously tribal people are more, we can say this is that means backward with respect to the modern days or modern technologies. Modern जेमति कि तमे कोन कहि परिबो नागालैंड रे ही परिबो. Okay, Nagaland region or Arunachal Pradesh region. So in that region what you can see some tribes are there which do not want to get involved with the foreign tribes or other tribes. तो सेति में सेमाने कोन करंती जे जदी गोटे जर्मन लोक जाइतिला इन सम ईयर दैट मींस 1999 और 2001 रे से जाइतिला ताकू कोन कले. सो बेसिकली से कोन कले देखिले टोपी फोपी पिंदी के आसी जर्मन पूरा व्हाइट कलर देखाउ जे दे फील लाइक ब्रॉयलर कुकुडा. ओके दैट मींस जदी गोटे भलो चिकन चाकन लोक देखि देले से माने कोन कले दैट मींस दे फील लाइक इट इज ब्रॉयलर कुकुडा. आ से कोन कले दैट मींस स्किन को बाहर कर देले तो काठी पुरै की सब घुरांती ने सब घुरै ताकू मार देले. Now thing is that ei bhaliya ho jeba reason kon because they are introvert, they are not going to mix with the other society. So government decided कि किछिटा ट्राइब कर मोटिव पई आमे कोन करिबा inner line permit should be defined. So inner line permit is basically defined with respect to violation of article 19 D and E. Inner line permit, that means it is present in the Assam region, Arunachal Pradesh region, Nagaland region, Manipur देइथिला तापर डिफाइन हे गला. मणिपुर कोन हे गला कैंसिल हे गला. It has been cancelled. Okay, so ये कोन हे गला कैंसिल हे गला. So that is why we can say Assam, Arunachal Pradesh and some of the Nagaland region it is having inner line permit. जम्मू एंड कश्मीर रे भी आगुरु ये हितला लद्दाख रीजन रे एस्टैब्लिश हितला but nowadays it is not present. So basically if you see, so this is talking about the inner line permit according to article 19A and D and E. Okay, now if you consider the that means 19A it is talking about speech and expression. Article C is talking about the association.
difference between 19A and C. What is the problem here? The problem with 19A is talking about the speech. Association means you can unite. Here it is individual. You are talking about individual. Here you are talking of a group. Gote group विषय कथा होजो. एटी गोटे individual हिसाब रे कथा होजो. Freedom of speech is given to every individual, you can say. Association means whenever more people are gathering, then what will happen? Okay, that thing it is saying. So here if you see the 19G, A, B, C, D, E, where is F? Then F kon hala? What is, where is F? So article 19F is scrapped. Article 19F is scrapped. Why? Because it is right to acquire any property or right to have any property. So जमींदार माने कौन कर दिले? So basically property अधिकार acquire कर दो दिले और basically government ऊपर भी allowed. So government ये कर दिला कौन right to have property तब निजे property रखी परिबो. Everything is there. That means right to property act. Property. Okay. It is not a fundamental right. एको कौन करा गला? Fundamental right to काट दिया गला. It is basically कौन करा गला? That means it is your constitutional right. जेमती कि recently कौन ही दिला? Recently आंध्र प्रदेश रे ही दिला. आंध्र प्रदेश रे कौन करा दिला? 10,000 acre lands was taken by the government there. Government नहीं जाई दिला. कौन पाई to establish the capital at capital कोडी करिया पे नहीं जाई दिला से. Where is the capital? आंध्र प्रदेश capital ला कोडी करिया पे नहीं जाई दिला. कोडी नहीं आया दिला. Yes, that is why 42nd Citizenship Amendment Act 1976. 1976 42nd. Yes. अच्छा, reasonable restriction कथा को तो तारे सर. Reasonable restriction कौन A and C रे. A and C, sovereignty, integrity, एटा भी समान अछि. There is not much difference. Public order थिबा दरकार. Public order integrity, security खाली extra अछि speech and expression रे. एटा तो association एलावन बाहर को दिबन ना. Okay, state can make specific. The 19F if you see, there was जल्दी देखी पारियो right to property हिसाब रे. Yes, you can say Guntur और basically Rajahmundry region. Okay, Rajahmundry region basically कौन ही पड़ता Rajahmundry region रे. So basically से नहीं थिला कौन capital बने पे. But then it has shifted to Vizag. Vizag रे करियो बोली कहा गला. तापने Guntur region of that means नेठी कौन नहीं गला से Vizag नहीं गला. Vizag कर दो बोली consider करा गला. So you cannot go. से गला जे हमें हमारे property दे दी तू. हमको property return करो. तमें अल्प पैसा रे नहीं गला एठी. तमें कैसे farmers माने कौन कर दिले strike कर दिले. That thing occurred in Andhra Pradesh. So this was against the right of a property. So that thing we will be discussing in latter part of constitutional rights रे हमें discuss करिबा. Okay, so 19F and article 31 is basically scrapped under Citizenship Amendment Act 1976 during the period of Indira Gandhi. I hope it is clear. 19G is saying you can profession, trade, occupation and trade occupation no kari paribo. But thing is that there is a restriction. What is the restriction? State can make specific qualification. Obviously gote post pai specific qualification दबो ना. Qualification civil service में तमे कहबो जे तृतीय फेल अंगुडा सब सीधे civil service दबो. सेटा तो हे परिबने ना. तापे qualification दरकार must be a minimum graduation थिबा दरकार. तो म कहबो जे right to trade अछि, right to employment, तो right to trade अछि मु बिक्री करबी. तो तुमको ट्रेड लाइसेंस दिवा दरकार ना. ट्रेड लाइसेंस भी that means here it is saying the exception कि yes you can go for the trading, you can go for the that means commerce, trade and commerce, you can go for the employment. But thing is that there must be एटी कौन कहि परिबा there must be कौन होबा दरकार. There must have the necessary qualification. That thing can occur in the article 19. So 19 is talking about 19 का विषय कहला freedom विषय कहला. कौन freedom अछि? Freedom of speech, assembly, association, movement, settlement and profession. Movement, settlement and profession. That is talking about freedom or article 19. I hope it is clear. 19 is talking about speech. Second one is speech and expression, you can say. So this is A. This one is B is speech. तापर कौन है जिबो? Assembly. C is your association.
So D is your association पर कौन है जाते assembly association. So D रे कौन है जीवो. So if you see D, movement and settlement. So movement. ये रहेगा कौन सेटलमेंट. F तो कैंसिल है राइट टू प्रॉपर्टी. केवे कैंसिल है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट दैट मींस 1976. ओके कितना नंबर अमेंडमेंट दैट इज 32 42. देन G इज सेइंग अबाउट G का विषय कहूची. G का विषय कहूची. So article 19 G is saying about the profession. Okay. This is the freedom is given. Now if this that means जदि एतरे तमे exception को overcome कलो, if you are committing some crime, जदि crime करा जीवो तुमको कोन करा जीवो convince करा जीवो. That means जदि crime हैला कोन हबो. If there is a crime, then you will go for arrest. Arrest में जीवो कि direct? No, you cannot go directly for the arrest. क्राइम हैला माने कोन हबो कन्विक्शन करा जीवो. कन्विक्शन फास्ट के जण ऊपर चार्ज लगा जीवो. देन तापर जुडिशियल रिव्यू जीवो और बेसिकली जुडिशियरी जीवो. जुडिशियरी परमिशन पास हबो. परमिशन पास हे साला पर तमे अरेस्ट को जीवो. सो हियर इफ यू आर सेइंग किछि जदी क्राइम हैला देन व्हाट विल हैपन. एठी क्राइम ता केमिति हबो. ओके. सो क्राइम हैला माने तमे केमिति व्हाट इज द फ्रीडम ऑफ द पीपल माने मनो इच्छा मो ऊपर तमे क्राइम रो केस लगे दे परिबो की. ऑब्वियसली नो. सपोज हियर तमे देखि दिबो देयर इज अ हस्बैंड. सपोज गोलू एंड गोली नाउ हस्बैंड. गोलू एंड गोलू इज अ हस्बैंड. गोली इज योर वाइफ. So first thing is that कौन ही परिबो से conviction किए करियो. So obviously गोली will do to गोलू. So there is no cases गोलू will conviction दे देबो काहू गोली को दे देबो. So basically article 20 is saying first section is saying no ex post facto law, no retrospective implementation of the law. Okay. Ex post facto law माने कोन. Ex post facto law माने so here if it is saying कि सपोज जो क्राइम ता हे नाही ड्यूरिंग द कमिटमेंट ऑफ द क्राइम. सो सी जदी किछि गोटे जिंस कहला. सपोज ही इज डूइंग समथिंग किछि जिंस स्पीच कहला कि किछि गोटे एक्शन कला. सी जतबेला कहउतला कि किछि कहउनी करि सरला पर तापर कहबो तमे एटा एंती पे करथिलो ना. सेटा होनी तमे भाबुथिलो मते कहिबा पई किंतु तमे कहि पारलनी. तमे आसिला बेले आज लेट कलो बोधे मो खाइबाटा खराब हे जे सेति में तमे लेट कलो. दैट मींस लेट में भी तार साइकिल पंचर हिदिबो जे करिवो. सो हियर व्हाट इज सेइंग कि जदी तमे लेट आसुजो घर को ता माने देयर इज टू केसेस. सो तमको इधर मो खाइबा भल लागुनी तमको नाले मो मुंह देखिया भल लागुनी. सो दैट थिंग इज बेसिकली अ कॉमन थिंग व्हिच इज आई एम नॉट यू कैन स्वैप आल्सो स्वैप कर दे परिबो. ओके. सो thing is that no ex post facto law, that means no retrospective implementation of the law. कि जत्ते वाला क्राइम हेइतिबो सेते वाला क्राइम हेने सेटा क्राइम बोली कंसीडर करा जाउ नथिला. बट आफ्टर इट हैज बीन डन तमे कोन करियो पास्ट को जाईगी कोन करियो सेटा चेंज कर दो. ना ना सेटा क्राइम थिला. तमे आज किछि गोटे जिंस कर दो. सपोज घरे तमे रहौ. सपोज हस्बैंड एंड वाइफ इज लिविंग. हस्बैंड कोन कला सेते बाहर को जाईगी कोन कर दी गोटे पुडिया खाइ देई पळे आसी. ओके पुडिया खाइ देई पळे आसी ये कर देई सेते बेसिन पाटी धोई देई किछि दिन पर जाय कोन कला सेही जिंस को पुणी रिपीट करा जीवो. रिपीट करिक कह जे तुम बा से दिन खाइतलो ता माने सेता वाला क्राइम बोली डिसाइड करा जाय नथिबो. तापर कोन हो सेटा भी क्राइम. अगर जो पैर का पंचनामा देखि जो तौलिया के गलत साइड से पोंछले. गलत साइड क्या होता. दैट मींस रॉन्ग साइड इज डिफाइंड एंड देन ओनली इट हैज बीन कन्विक्स्ड. सो नो एक्स पोस्ट फैक्ट. दैट मींस इफ अ क्राइम हैज दैट मींस ड्यूरिंग कमिटमेंट जदी एही टाइम रे सपोज एटा केता हे जे 11 टा बेले 11 am रे if something is not a crime experience. That means okay experience समझते कर अछि. all have experience. Okay. So 11 am रे जदी किछि ओटे जिंस क्राइम हेइनी if it is not a crime तमे कोन करिवो after the commitment of the crime you cannot define
कि तुम सेतबेले जोटा करथिलो सेटा क्राइम करिथिलो ओके यू व्हाट एवर यू आर डन इज क्राइम एंड तुम या पाकू कन्विक्शन हबो आ तुम कोर्ट को धराई आसीबो दिस थिंग cannot happen according to article 20 मु एटा करथिली एटा 10 वर्ष परे क्रिमिनल एक्टिविटी को नै कि तुम कोन करि परिबो केस करि परिबो नै नो एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ इफ इट हैज नॉट बीन ऑकर्ड एटा जदी हेइनी सही टाइम बेले मु कहबी जे सेतबेले सपोज देखो इफ यू सी लैंड एक्विजिशन जेतबेले देखिबो दैट मींस ड्यूरिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस बेले बहुत गुडे लोक कोन करथिले बहुत सस्ता रे लोकन को ये करिकि जमी गुडा नै जाउथिले ओके आजिकल देखिबो जदी बहुत जनकर बहुत जगह रे जमी पड़ी छि इन द नेक्स्ट नेम ये रे फैमिली ने रे यानार दानार गवर्नमेंट तबरे कोन अमेंडमेंट कर देले तमरो टोटल फैमिली रो प्रॉपर्टी की तुम देखिया को पड़िबो गोटे हिसाब रे फादर मदर चाइल्ड ग्रैंडफादर सब गुडा को नै देखिया को पड़िबो आगुर नाले कोन थिला जॉब करथिला हस्बैंड वाइफ नारे सब जिंस करथिला कि झियो नारे करथिला तो जिंसडा प्रॉब्लम कोन होतला कि प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी थिला जॉब को जॉब धै होतला आउ बेसिकली टैक्स रिवैर्डेशन एवरीथिंग इज बेसिकली डन ओवर देम एबे कोन कला फैमिली को गैदर कर देला कि आगुरु जो माने लोक करिथिले से बेले जिंस ताको पर किछि लीगल एक्शन नै परिबो कि ऑब्वियसली ही कैन टेक गवर्नमेंट नै परिबोनी गवर्नमेंट कोन कहला आफ्टर दिस वन यू हैव टू रिप्रेजेंट योर प्रॉपर्टी इन अ सिंगल प्लेस ओके सपोज जने गोटे मर्डर कला और बेसिकली जने कोन कला व्हिच वाज नॉट क्रिमिनलाइज हेइ नथिला क्रिमिनलाइज नाही किंतु तापर सपोज एबे एलजीबीटीक्यू इज बेसिकली कंसीडर्ड एज डीक्रिमिनलाइज्ड सेक्शन 377 सो डीक्रिमिनलाइज हेइ सला पर तापर किछि दिन पर सपोज क्रिमिनलाइज हेइ गला जदी एबे जे एलजीबीटीक्यू प्रैक्टिस कर जी ऑब्वियसली यू कैन नॉट पुट और कन्विक्स देम कन्विक्शन ही परिबनी तांकर because they were practicing LGBTQ. So that is no extra post facto law or no retrospective implementation of the law that has been occurring under Article 20. Article 20 is saying the crime which has not been committed or basically the action which was not been considered as a criminal activity during it has been committed, it cannot be convicted later onward by considering it as a criminal activity. जोटा एबे क्रिमिनल और क्राइम एक्टिविटी रे जाउनी सेटा को मु परे क्रिमिनल एक्टिविटी को कंसीडर करी कि ताको पुणी आउतरे डिस्कस करि परिबी नाही दैट इज नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ और नो रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ आई होप इट इज क्लियर सब आसी तारे सर ओके So there is no ex post facto law. You need to understand कि the criminal activity which has not been occurred, जोटा criminal activity बोली consider करा ही नहीं, सेटा को आगु को change करके criminal activity बोली consider करा जाए परिवो नहीं. That thing is basically occurring there. Next is saying no double jeopardy should not be punished twice. Again couple or basically husband wife. ओके सो हस्बैंड कहि दिबो जे मु तुमको नै कि जीबी कोडे दैट मींस गोटे ड्रेस देबी ओके ड्रेस देबी नले कहि दिबो जे नै एनिवर्सरी दिन मु आसी कि जीबा हम मिसी कि कोडे बुलिया को जीवो से आसी पारिबोनी सपोज अकॉर्डिंग टू वाइफ इट इज ए क्रिमिनल एक्टिविटी बट दैट एक्टिविटी पई से टोटल 1 ईयर 365 डेज मल्टीप्लाइड बाय दिल्ली को दिन सकाळ संध्या दी थर नै जाओ 365 डेज मल्टीप्लाइड बाय 2 यू विल बी कन्विक्स तमे पा इडा आसी नथिलो तमे पा ये आसी नथिलो दैट मींस बेसिकली व्हाट यू कैन कंसीडर कि जदी एनिवर्सरी दिन कि कोन सेडा सालगिरा ना कोन सालगिरा त नै सेडा वर्ष पुरानी ना सो व्हाटएवर दैट मींस गोटा एनुअल जो ये था एनिवर्सरी था सो एनिवर्सरी दिन बेसिकली जदी वाइफ को कमिटमेंट देई जे आसी अपन जदी न आसी पारला सपोज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वाइफ इट इज ए क्रिमिनल एक्टिविटी इफ इट इज ए क्रिमिनल एक्टिविटी सो सी किंतु कोन करि परिबो 365 मल्टीप्लाइड बाय 2 twice a day so twice a day and 5th and 6th times in a night okay so basically twice mu consider करू जी so 365 multiplied by 2 times she can convict her कि punish her कि कोन करि परिबो punishment दे परिबो so that thing is not available in your Indian constitution that thing is only available in the wife's constitution okay so thing is that गोटे क्राइम पाई दीदी थर तुमको पनिशमेंट मिलिबो नाही थरे 6 वर्ष हैला पुनी आउ थरे से केस को पुनी रीओपन हैला एठी पुनी 8 वर्ष हैला पुनी आउतर केस रीओपन हैला एठी 6 वर्ष हैला जो 6 6 12 8
20 एतिक तो ये हबन ना गोटे केस पाई गोटे डेफिनाइट अमाउंट ऑफ पनिशमेंट थिबो सपोज जड़े लोक 2018 रे क्राइम कला से कौन है ता केस फाइनालाइज है 22 रे आ ताकू कुआ गला जे 8 वर्ष जेल हबो तो से केते वर्ष रहिबो 18 रु 22 है 4 वर्ष 22 रु 26 है 2026 रे ही हैज टू बी रिलीज अदरवाइज हम कौन कहि परिया अदरवाइज व्हाट वी कैन से वर्ष गया ओके अदरवाइज व्हाट वी कैन से हम कौन कहि परिबा जे ताकू दी थर पनिशमेंट हबो जण को जदी 4 वर्ष 8 वर्ष ता माने फ्रॉम द इम्प्रिजनमेंट इट नोट टू बी कैलकुलेटेड जो दिन रु से जेल भीतर को जाई जे अरेस्ट है कि जेल भीतर को जाई जे सेही दिन रु तार जेल पीरियड ता कैन कंसीडर करा जिवो ओके इट इज नॉट लाइक डिसीजन हला 22 रे 22 पर पुनी 8 वर्ष रहइबो नो इट इज नॉट लाइक दैट कि जो दिन रु रही जे से दिन रु ये परिबो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन सेल्फ इंक्रिमिनेशन माने कोन मु जाय कि कहि परिबिन जे ना नाही मु ही ए करजी एवरीथिंग इट शुड नॉट बी कंसीडर नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन शुड नॉट बी एक्ट एज ए सेल्फ एविडेंस मु जाय कि कहले जा मु मर्डर करजी ए करजी नो इट्स देयर शुड बी सम एविडेंसेस किछरा एविडेंसेस दिवा दरकार एविडेंस दिवा दरकार कोन दैट मींस तमे कोन कहउतबा दरकार योर स्टेटमेंट कैन बी recorded for other person who is doing the conviction that means crime तब निजर स्टेटमेंट कहि हबनी कहि परिबनी अनलेस एंड अंटिल यू कैन बी कंसीडर्ड एज एविडेंस हिसाब कंसीडर करि परिबो सेठी कहबो एठी कोन कहबो ब्लड डीएनए सीमेन कैन बी टेकन एज एविडेंस एटा को एविडेंस हिसाब रे कंसीडर करि हबो गोटे लोकर ब्लड को नेगिर कंसीडर करि हबो सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज फ्रीडम विथ रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस आर्टिकल 20 it is saying article 20 okay so article 19 is over article 20 is over article 21 is saying state can't take life and liberty of a person except procedure established by law so law is basically two times one is procedure established by law and a due process of the law due process of law is basically natural law procedure established by the law means legislative that means law passed by legislature so which is a law in the basic legislature kon kabo parliament re pass karibo then it is acting as a law so this is basically considered as procedure established by law due process of the law mane due process tamna automatically jota law hisab re consider kara jo right to eat right to breathe good air healthy atmosphere so everything is considered as due process of the law law is basically two types one is a procedure established by law it is by the parliament is basically establishing the law or introducing the law by the means of a constitutional amendment act or basically by passing of a bill okay or basically by only passing some acts it is basically procedure established law Article 21 is saying state cannot take life and liberty of a person except procedure established by law. Procedure established by law माने तुम जदि किछि गोटे that means constitution को amend करूछो with respect to law then only you can restrict the life and liberty but तमे एमिति मन इच्छा रे केबे भी कहि परिबो नाही life and liberty नै जाय परिबो नाही so according that means जो emergency case इतला life and liberty was violated that is why according to Maneka Gandhi case there must be a dignified life it has been called as dignified life that is why it has been verdicted कि article 21 can never be cancelled can never be suspended in case of emergency also emergency रे भी ये कोन हबनी suspend हबो नाही it will not be suspended during emergency also okay life and liberty so let us go for the cases kon heitila so cases hela a gopalan case narrow interpretation of the judicial procedure a gopalan case re kon heitila ki article 21 how it is defined what is the meaning of a procedure established by the law kon hobo so basically it is there is a narrow interpretation of the procedure established by law that means it has only been told that कि the thing which has been amended by judicial or basically amended by
amended by किए amend कर देबो parliament और basically legislative active basically legislature law pass करिवो जोटा that means constitutional amendment act हिसाब रे आसीबो नले depends upon the parliamentary activity parliament. So basically this thing has occurred but not a elaborated or descriptive explanation of the Gopa or basically article 21. Then we are going for Maneka Gandhi case which broad interpretation of life or basically dignified law or life or dignified life विषय के कहला Maneka Gandhi case that is dignified law or dignified life. What is dignified life? That means which makes life complete, worthy and beautiful. That means right to live, right to that means have a good air, right to have polluted free water, right to have a that means life and liberty. So the right to life achi, so we can say article 21 is saying a dignified life. So dignified life, we are talking about dignified life. Can I say article 21 empowers dignified over basically right to death, right to have a dignified death? Can you consider right to have a dignified death is under or empowered by article 21 of our constitution? Right to death को consider करी हबो की? Can we consider right to death? Death है पर मु चाहिले मरी परिबी के मन इच्छा संगे संगे विषय की मरी हबो की? So right to death is basically कोडा जो euthanasia देखि थिबो गोटे मूवी कौन सेटा बस इतनी सी सो हितिक रोशन ऐश्वर्या रे गोटे मूवी नथिला गुजारिश मूवी रे. सो डेथ से कौन कहि परिबो? डेथ इज बेसिकली दिस इज कॉल्ड यूथनेसिया मींस सेल्फ डेथ. ओके, सो बेसिकली यूथनेसिया कौन कहूची कि जदी इफ अ पर्सन इज लिविंग he cannot go for euthanasia. One is called as active euthanasia, another one is passive euthanasia. Active euthanasia कौन कहूची life stopping drugs और sorry ये कौन होची direct death. किंतु passive euthanasia कौन life stopping drugs, तमे life stopping drugs यूज करि परिबो, supports को नहीं जाई पाए कि धीरे धीरे मरि परिबो. So right to death is also available but with some restriction, that is passive euthanasia is allowed, but active euthanasia is not allowed. Passive euthanasia is allowed, active euthanasia is not allowed. Okay, Mohan Singh case. Okay, so basically if you see how 21 is also dealing with also का से तो euthanasia विषय कहूची and capital punishment. It is also dealing with the capital punishment. जो death sentence दिया होची ताकू भी ये करो किछना एनजीओ कोन कर दिला केस कर दिले जे नो इट इज वायलेटिंग द आर्टिकल 21 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. कहा को भी हमें कैपिटल पनिशमेंट दबा कथा नुहे. बट अगेन सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट कण आसिला जे देयर आर सम हीनियस इंस्टेड ऑफ ए हीनियस क्राइम केतबेले दे हेबो कैपिटल पनिशमेंट. हीनियस क्राइम यदि हीनियस क्राइम कोड जे अक्षमणीय दंड ही करू जे एंड ऑब्वियसली child abuse case आसे और बेसिकली child harassment case आसुजे. सो इन दोज केस बिलो 12 years रा तळु को जदी एबे आसी जाई कोन जदी हे गला ताको कैपिटल पनिशमेंट हिसाब रे कंसीडर करा जाई पारिबो. हीनियस क्राइम एंड चाइल्ड दैट मींस कोन एक्सप्लॉइटेशन. सो बेसिकली बिलो एज 12 is basically considered to be given as the capital punishment. Otherwise capital punishment cannot be given to every person. समझते हो capital punishment दिया जीवनी because it is violating article 21 of Indian constitution. This is article 21. There is another one article is there, article 21A. Okay, article 21A. Article 21A, if you consider article 21A, so here it is saying this is right to education, right to compulsory education, right to education or compulsory education from the age 6 to 14. If you see this is right to education. Okay,
So this is right to education. So right to education, if you consider, so there is basically right to education is basically provided by some of the articles. DPSP रे भी अच्छी, fundamental duties रे भी अच्छी, fundamental rights हिसाब रे भी अच्छी. कोटा का साथ related question आसी परिवो. According to 21A, free and compulsory education for child 6 to 14 year old is under fundamental rights. Okay, fundamental rights. This is basically amended. So amend करा है constitution को under that means 35 I think. So I will going through that. So here we can say 21A is basically free and compulsory education for 6 to 14 years old children. Okay. So this is the fundamental right part. Then it is your DPSP. DPSP कौन भाई? एटी कौन करियो state measure नबो. That means DPSP से कौन को under article 14 it is saying it is the responsibility of a state. Under article 45 it is saying it is the responsibility of the state for the childhood care and education for the people, for the children who belongs to 0 to 6 year. शून्य रु 6 वर्ष पर्यंत जी अच्छी से कौन हम ताको एजुकेशन दिया जीवो. एटा कार रेस्पोंसिबिलिटी? इट इज द रेस्पोंसिबिलिटी ऑफ द स्टेट. सेहिति पाई तो कौन करछि से सर्व शिक्षा अभियान is basically started according to the DPSP article 45. Another one there, fundamental duty 51A of subsection K. So parent and guardian. So this is the fundamental duty, fundamental duties. Okay, fundamental duties एटा to send their children to the school. School के सामने पढ़ाया पाए से कौन कर जे allow कर जे. So this is basically it is the duty of the state. That means state if it is requesting to the people to follow, that is fundamental duty. Okay, so it is the responsibility of the state. It is the responsibility of the state to ensure. That means fundamental right के तबले को जी 6 to 14, 0 to 6 article 45 it is saying. Okay. Next is your article 22 is saying. Article 22 कौन कही जी? What the article 22 is saying? Right against arrest and detention. ऑर्डिनरी बेसिस रे कोन अरेस्ट एंड डिटेंशन केतेबेले हेई परिबो केतेबेले हेई परिबो ऑर्डिनरी केस रे केतेबेले ग्राउंड एंड बेसिस ऑफ द अरेस्ट तमे ग्राउंड एंड बेसिस कहलो. सो अरेस्ट केमदी हेबो? अरेस्ट फर्स्ट क्राइम हेई दिबा दरकार. क्राइम को कोन करिवो? कन्विक्शन करिवो. कन्विक्शन कर साला पर दैट मींस देयर शुड बी लीगल कंप्लेंट हेई परिबो. जो अरेस्ट वारंट आनी जो पछाड़ दियंत मूवी रे लीगल कंप्लेंट हेई परिबो. देन लीगल कंप्लेंट हेई साला पर कोन हेबो? मैजिस्ट्रेट पावर और बेसिकली ऑर्डर आसीबो. Magistrate order आसीबो. Then you can go for the arrest. That is the natural process or basically ordinary law, ordinary procedure. But prevention detention कोन basic rights can be told. तमे जत्ते बेले तमे अरेस्ट करिवा पई जीवो काहाकू. If this is police, if it is going, he can ask कि what is the reason कोन पई मते अरेस्ट करछो. Accept national interest. तमे जदि national interest तमे लागू छी आगो को इलेक्शन रे तमे कोन करि परिबो? किसरा वायलेशन करि परिबो, वायलेंस क्लियर करि परिबो. देन आल्सो तुमको कोन करा जाई परिबो? कॉन्स्टिट्यूशन रखि दे परिबो. जेमति मुफ्ती मोहम्मद ऑफ जम्मू कश्मीर ताको इन द नेशन से इंटरेस्ट रे ता कोन कर दिया गला, जेल कर दिया गला. ओके, सो बेसिकली सो मेनी लीडर्स ऑफ जम्मू कश्मीर, हुरियत लीडर्स, समान को ड्यूरिंग द इलेक्शन और ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर बेले ताको सब कोन अरेस्ट कर दिया गला. काहे की कर दिया गला? काहे न दे आर मे बी गोइंग टू डिस्टर्ब द peaceful procedure which has going to establish in Jammu and Kashmir. Without having ता माने जदि पार्लियामेंट जदि रखा जीवो नेशनल से इंटरेस्ट पाई ताले कोन दरकार? पार्लियामेंट्री असेंट दरकार. आ पार्लियामेंट पाखर पावर अछि. आफ्टर दैट परमिशन में बे एडवाइजरी बोर्ड इज नीडेड. एडवाइजरी बोर्ड रो दरकार हबो. अदरवाइज पार्लियामेंट कोन करि परिबो? 3 मास पर्यंत अलाउ करि परिबो कि पुलिस मानको को एम्पावर करि परिबो. तमे नेकी जेल रे पके दे परिबो. माने मते जदि जण उठे कि नै जो कि तमे नेशनल इंटरेस्ट ही करछ तो नाइ डायरेक्ट जेल रे पड़ियो मते. ओके, तापर कोन हो 3 मास पर्यंत रखिबे, तापर छाडिबा को बाध्य. जदि रखिबा को पड़िबो तांको ताले कोन हो? एडवाइजर बोर्ड दरकार हबो. सी कोन करिवो? सी अलाउ करिवो. On 44th Citizenship Amendment Act, this has been reduced from 3 months to 2 months. एबे 3 मंथ रु एटा केते मास पर्यंत रिड्यूस कराइ छी? 2 मंथ्स पर्यंत रिड्यूस कराइ छी. एटा क्वेश्चन आसी परिबो.
For the nation's interest, according to Parliamentary Act or Parliamentary Act passed, a person can be arrested and kept in prison for a period of 2 months, not 3 months. If 3 months dabo sera wrong achi, because 3 months ra change hai sallani already. Okay, this is talking about Article 22. Article 22 is saying about the Article 2 right against arrest and detention. Okay. So next we can go for next we can go for your the question answer round. Please go through the question and try to answer it. Question solve करो और answer करिए कुछ चेष्टा करो. सब ले पढ़ो सब पढ़ो. Yes. Okay. So what will be the answer? Which of the following are guaranteed under Article 19? Article 19 हिसाब रे कोटा guarantee दिया जाइछि. Right to form association or unions or cooperative societies. Right to move freely throughout the territory of India. Right to acquire, hold and dispose of a property. Right to acquire, hold and dispose of a property. मनो इच्छा property नहीं पारिबो कि? This is not given. So this one is not given. So right to form association, unions and cooperative society. Eta ko article kete ko je? Article 19 C. Association formation kariba. Okay. Right to move freely throughout the territory. Move free out the territory and settling down. Se kete hi jibo? E. Okay. Then it is saying right to employment and appointment to any office of the state. Right to employment and appointment to any office of the state. जे कोनोसी office रे, any office of the state रे. But restriction अच्छी there एटा अच्छी. It is allowed, but with some restriction. कि educational qualification. This is allowed, but with some educational qualification. This is also allowed. What is the answer here? Option C is the correct answer. Option C. 1 and 2. Okay. So this is given. Try to understand, Gangadhar. So section 4, that is question 4 is saying right to employment. Yes, that means employment hey paribo trade commerce, that is G ta koji. 19G is talking about the employment appointment. But thing is that there must be some educational qualification. As a citizen, you must be a citizen. तापर तमे educational qualification determine करिवो को office में तमे eligible or not eligible. But being an Indian citizen, you can apply. There is no ground कि यही लोग को एठिकार लोग को एटा apply हे करि परिबेनी ये करि परिबेनी सेमिति नाही. Okay, only educational qualification is a problem here. Question number 2: which of the following rights are included under the freedom of speech and expression? Which of the following rights are included under the freedom of speech and expression? Expression guaranteed by Article 19 of the Constitution. Right to know about the government activities. That is RTI, right to information. Right to information, which is under the epistolary jurisdiction of a Supreme Court. Okay. Next one is the right to strike. Right to freedom of silence. Right against the imposition of a pre-censorship of a newspaper. Which among the following are correct? Yes, it is your C. C 1, 2, 3, 4. Right to strike. No. Correct. Right to strike habo, kintu right to strike, that means here you can say peaceful manner. Peaceful haba darkar. Right to strike mane eta peaceful haba darkar. You can protest, you can movement kari paribo. Strike kari paribo kon with some industrial law, industrial labor kari paribe. Industrial law hisab re paribo. Okay, industrial law hisab re paribo.
So basically second statement is not true because here strike तमे मन इच्छा करि परिबोनी strike कोन हे परिबो statement 1 is correct right to know about the government activities that is RTI is under your freedom that means article 19 includes freedom of speech तमे तमे कहिबो न कहिबो तम ऊपर डिपेंड करे silence हे परिबो article 19 is talking about this one right against imposition of free censorship of a newspaper वन newspaper जहा चाहिबो से लिखि परिबो का को भी क्रिटिसाइज करि परिबो against that means here we can say it should not be violating the Indian nation's interest nation interest को India wants to know India should be there okay so 1 3 and 4 is the correct answer I hope it is clear question number 3 freedom of assembly under freedom of speech and expression by article 19 of the Indian constitution includes right to hold a public meeting and a demonstration right to take out processions right to strike again you can say this is correct right to take out procession kari paribo kintu jinsa hoji kono right to strike it means peaceful haba darkar that means unarmed haba darkar this one is wrong this is correct so answer will be 1 and 2 here which of the following has been declared by the Supreme Court as a part of article 21 quote article 21 ro part gote right to information right to reputation right to freedom of education up to 14 years right to freedom of education up to 14 years select the using article 21 is saying article 21 if you see what is article 21 see here freedom article 21 a is saying about the freedom of education 21 is saying state cannot take life and liberty so obviously dignity is there so if you see this is compulsory up to 6 to 14 years so here we can say kon answer right to strike is fundamental right but right to strike is not a fundamental right to peaceful strike is a fundamental right तमे स्ट्राइक जो करिवो सेटा पीसफुल हबा दरकार इट कैन नॉट बी वायलेंट वन वायलेंट है कि हे परिबो नाही सो हियर वी कैन से राइट टू पीसफुल स्ट्राइक इज अ फंडामेंटल राइट हियर ओके सो दिस वन इज करेक्ट राइट टू रेपुटेशन सो रेपुटेशन तमे करिवो दैट इज आल्सो योर राइट नो प्रॉब्लम राइट टू इन्फॉर्मेशन माने तमे कोन करि परिवो राइट टू इन्फॉर्मेशन सो आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन this is under which article 19 so RTI विषय किए को है right to it is your freedom to get the information about the government activity or anything so that is basically under article 19 this is not under article 21 so answer will be 22 and 3 so answer obviously option C is the correct answer answer C is the correct answer right to information or RTI act is under article 19 it is not under article 21 yes that is peaceful fundamental right means right to strike or tame strike jai paribo but here you can say peaceful haba darkar it must be a peaceful movement so movement kari paribo strike the industrial law hisab re implement habo okay yes Gangadhar okay I hope it is clear next question is say consider the following statement article 21a provides the state should provide free and compulsory education to all children of the age group or age of 6 to 14 here 20 is saying 6 to 14 article 51a provides that it shall be duty of every citizen to provide early child care and education of his child or ward until they complete the age of 6 0 to 6 please try to answer this one a question answer ta daba darkar what will be the answer question number 5 Smriti Rani how can it be 251a is it that means it is the duty ye kaha ko कहदिला that means child care and education it is under DPSP okay so DPSP under कितना आर्टिकल थिला आर्टिकल 41 sorry 45 article 45 so this one is not under article 51 please see here it is dekhi diya also
सित में कोच ठीक देखो बोल से आर्टिकल 45 इज सेइंग चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन फंडामेंटल राइट ड्यूटी 51 K is basically the fundamental duty. So it is under article 51A. So here under 51K K. So here what we can say 51A is not saying about 51A is not saying about का विषय से कहूनी it is not saying about. So it is not saying about this is child care and education, rather it is talking about. So remember 45 is talking about the DPSP where it is saying state should go for the education between the age limit of 0 to 6. That is why Sarva Shiksha Abhiyan. 51A is talking about 51 का विषय को article 51A is talking about 51A is talking about it is the responsibility of our parents or guardian to send students to school and it is compulsory between 0 to 6 is basically compulsory. Okay, 0 to 6. So statement 2 is not correct, this is wrong. This should be article 45 A. But if you see statement A, that is correct here. A is talking about 21A. So answer will be only one. Option A is the correct answer. Yes, Rosni, Smriti Rani, Sasmita. It is not C, it is A. Okay, Didimai, it is A. Smriti Rani, it is A. Okay, I hope it is clear, guys. जदि तुमको वीडियो भल लागुची तो लाइक करो, जदि वीडियो भल लागुनी तो डिसलाइक करो, किसी भी जिनिस करो. इट इज योर फ्रीडम तो अच्छी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. सो प्लीज शो योर एक्सप्रेशन, डू लाइक, डू सब्सक्राइब. सेठी सब्सक्राइब कर दियो, नोटिफाई जेते बेले भी आसी जीवो तमरो लिंक आसी सेठी नोटिफाई मार देला माने तुमको पळे आसीबो नोटिफिकेशन कि ए क्लास ता हला बोली. ओके, सब्सक्राइब करो. तो यूट्यूब रे क्लासेस होची, आप रे क्लासेस होची, मोर यूट्यूब रे क्लासेस होची. डू लाइक एंड शेयर करो सांग मान को पाखरे टिके व्यू माने करिया पई कुह. सो बेसिकली इट विल हेल्प कोन करिया पई तो स्प्रेड आउट होबा पई भलो होबो. ओके, एंड दोज हु वांट टू टेक द सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज. ओके, आ गोटे क्वेश्चन भी अछि, आ भूली जाइतु 6टा क्वेश्चन अछि. सो अनदर वन क्वेश्चन इज देयर, लेट अस डिस्कस. ओके, इसकी को लिखा है. ओके, Tare sir, answer this question. So everyone try to answer this question. Which of the following statement is true with respect to protection against prevention detection guaranteed under article 22? Under article 22, which of the following statement is true against the protection against the prevention detention guaranteed? The state legislature have exclusive authority to make a law for a prevention detention for reasons connected with the security of the state and the maintenance of the peace order. True or false? Obviously it is true. The parliament has exclusive authority to make a law for preventive detection for reasons connected with defense. Okay, one second. So one thing is there, foreign affairs and security. The parliament had exclusive power. Here the state legislature. एठी का विषय कहूची से स्टेट लेजिस्लेचर विषय कहूची. So one second, टिके बोल से देखो. Here it is saying parliament, but it is saying under article 22 who is having more power to, that means जो that means का को जदी state interest माने कोन एठी का विषय कहूची. It is talking about the country who has the power to keep 3 months एबे जोटा 2 months का पाकर पावर अछि सेटा. It is only with the parliament. State legislature पाकर किछि भी सेमती पावर नाही. So statement is wrong. एटा का पाकर अछि only parliament पाकर, state legislature पाकर मोलरो नाही. So answer कोन है जो statement 1 is your wrong, statement 2 is your correct. So answer is your B, that is your correct. होला कोन parliament has exclusive authority to make a law for preventive detection for the reasons connected to defense, foreign affairs and security. ता माने से कोन कहूची कि प्रिवेंशन डिटेक्शन ता माने जन जल्दी जाउची तमे कोन करि पारे डिफरेंट स्पेसिफिक लॉ तैयार करि परिबो. कोटे डिफरेंट पर्सनल डिफरेंस फॉर डिफेंस रो पर्सनल, फॉरेन अफेयर्स रो अछि कि सिक्योरिटी से जे रिलेटेड अछि ताको ऑर्डिनरी हिसाब से अरेस्ट करि आनी परिबोनी.
तापय स्पेसिफिक लॉ थिबा दरकार आ सेटा की डिफाइन करियो पार्लियामेंट ही डिफाइन करियो सो प्रिवेंशन डिटेंशन हो किमा अरेस्ट हो एवरीथिंग विल बी डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट इट इज नॉट रिलेटेड टू it is not related with respect to the state legislature so statement 2 is the correct answer okay I hope it is clear so don't forget my code while subscribing so for that we subscribe karo OPSC ro OPSC ho plus SSC ho whatever the syllabus jo thre GS अछि ता पई follow karo मते follow karo like karo subscribe karo this is under your article fundamental article 19a okay 19a हिसाब रे अछि so do share भी karo okay so जहां भी problem अछि तो group रे अछि so to be in the group please message me 79780 72038 इधर मैसेज करियो जदी ग्रुप रे भी ऐड हे जिवो तमे YouTube ग्रुप रे जोटी फ्री रहउची सेठी तुमको PDF भी मिली जिवो ओके सो थैंक यू एवरीवन सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आज बहुत तरह कोची काहे ना करो हला दरकार अछि ओके सो थैंक यू एवरीवन थैंक यू ओके होप it will help you